Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Science of Life with Dr. Mohammed Yousaf. Today I am going to discuss the regulation of secretion of testosterone. And as per my routine, one hadith. फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला वल यदुल उलिया हियल मुनफक़तु वल यदुस सुफला हिय साइला। मशहूर हदीस है। यद हाथ को कहते हैं, उलिया ऊंचा, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तशरीफ़ फरमाई है साथ, वल यदुल उलिया हियल मुनफक़तु, ऊपर वाला हाथ खर्च करने वाला हाथ है, वल यदुस सुफला हिय साइला, और नीचे वाला हाथ मांगने वाला हाथ है। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस आई है। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तशरीफ़ फरमाई हुई है, ऊपर वाला हाथ देने वाला हाथ है और नीचे वाला हाथ मांगने वाला हाथ है। मांगना वाली जो एक किस्म की ज़िल्लत है, उससे बचने की मैक्सिमम कोशिश की जाए। मोमिन बड़ी ऊंची चीज़ होता है, उसको इन जलील हरकतों में मजबूरी अलग चीज़ है। मजबूरी हो जाए तो फिर तो उसके लिए गुंजाइश है, अदरवाइज बाद लोगों की ऐसे ही मांगने की आदत होती है। तो ये खर्च करना जो है ना, पहले भी सदके वाली हदीस हमने की है, खर्च करने पे माल बढ़ता है। तो ये देना जो है ये इज्जत है, ये बुलंद मर्तबा है। तो देने वाला हाथ बहुत बेहतर होता है मांगने वाले हाथ से। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरों पर खर्च करना बेहतरीन सदका है। So we are going to talk about the regulation of secretion of testosterone, like hormones of adrenal cortex, like hormones of thyroid gland. Regulation is from the hypothalamo-hypophyseal axis. This gonadal hormones, estrogen, progesterone female and testosterone in male, they are also controlled by the gonadotrophic hormone, which is in turn is being controlled from the hypothalamic releasing hormone. So hypothalamo-hypophyseal feedback control is there. Hypothalamus produces releasing hormone for the gonadotrophic hormone from the pituitary, and the gonadotropin releasing hormone GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GN गोनाडोट्रोपिन को लिख देते हैं, RH रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, एंड पिट्यूटरी से जो प्रोड्यूस होती है दैट इज द गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। वो दो हैं, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। या मेल में इसका प्राइमरी फंक्शन कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है, एंड द सेकंड गोनाडोट्रोफिक हार्मोन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, but in male it is also known as ICSH, interstitial cell stimulating hormone, because it stimulates the interstitial cells of Leydig, so it is also known as interstitial cell stimulating hormone, LH भी कह लें, लेकिन अच्छा नाम मेल में ये होगा। LH स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देयर इज नो ल्यूटिनाइजेशन, वो तो ओवरीज में होता है, वो डिस्कस करेंगे। बट this name or this name, both names are correct. This is responsible for the stimulation of testosterone secretion from the Leydig cells. So these two levels, hypothalamus and the hypophysis, pituitary and this. Now gonadotrophic releasing hormone, some description, some detail about the gonadotrophic releasing hormone from the hypothalamus. It is a polypeptide of 10 amino acids, decapeptide आप कह लें। So it is produced in the arcuate nuclei, cells in the arcuate nuclei of the hypothalamus, and like all other releasing hormone, it is brought nerve endings, they go to the median eminence, and median eminence may it is released and it is absorbed into the hypothalamo-hypophyseal portal vessel. We have discussed it in endocrinology, and then it is brought to the anterior pituitary. One important thing, that is, release of this gonadotrophic releasing hormone is not a continuous process. It is cyclic variations occur. Intermittent release of gonadotrophic releasing hormone occurs.
And when more is required, this frequency and this intermittency cycle is shortened, frequent release occurs. And when the less amount secretion is required, then this intermittency continues, but duration is prolonged. That is, after long interval it will be released. So cycle will be repeated after long interval. But intermittent cyclic release of gonadotrophic hormone, a few minutes release after 1 to 3 hours. ये regularly 1 से 2-3 घंटे के बाद कुछ मिनट के लिए रिलीज होता है, then फिर सो जाते हैं. So cyclic variations in this hormone are there. And variation in frequency of release and variation in quantity of release in each cycle, it determines the total amount of this hormone produced, and according to the requirement will be. So there is gonadotrophic releasing hormone, cyclic variations are there. Luteinizing hormone secretion, this is the gonadotrophic releasing hormone. It will act on the anterior pituitary for the gonadotropes, and it will cause the release of FSH and LH. LH, luteinizing hormone, ICSH, interstitial stimulating hormone, it exactly follows the cyclic variations of this. वो ये ऊपर जाती है तो वो भी ऊपर जाती है, वो नीचे आती है तो ये भी नीचे आती है. So almost उसी तरह there are cyclic variations, that the intermittent release of luteinizing hormone is there along with this. And there is, so that's why it is also known as luteinizing hormone releasing hormone. This gonadotrophic releasing hormone or luteinizing hormone releasing hormone, because LH more faithfully follows the cyclic variation. इसलिए इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं, बट लेकिन ये दोनों पे काम करती है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पे यही काम करती है. सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सो गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन produced from the hypothalamus, brought by the hypothalamo-hypophyseal portal vessel to anterior pituitary, where it causes the release of LH and FSH, both. In दोनों को काम करती है. These both hormone, gonadotrophic, these are the gonadotrophic hormone, anterior pituitary hormone. Gonadotropes are the cells responsible for the production. So they are glycoprotein in nature. LH and FSH दोनों glycoprotein है. They are produced by the gonadotropes in the adenohypophysis in the anterior pituitary, and like LH cyclic release according to the cyclic fluctuations of the gonadotrophic releasing hormone. पिछली स्लाइड में अभी मैं बयान करके आ गया हूँ. LH exactly इसको फॉलो करती है. FSH भी किसी हद तक फॉलो करती है. FSH also increases or decreases with the fluctuation of the gonadotrophic releasing hormone. ये भी उसी तरह fluctuate करती है, लेकिन ये exactly very faithfully follow करती है gonadotrophic releasing hormone को LH. ये ऊपर नीचे, ये exactly उसी तरह ऊपर नीचे, और ये भी थोड़ी थोड़ी उसी के करीब fluctuations are there. Now gonadotrophic releasing hormone is also called as luteinizing hormone releasing hormone, because more faithful relation between the this gonadotrophic releasing hormone and LH. Without gonadotrophic releasing hormone, ये sentence mark कर लें, red में लिख लें. If there is no gonadotrophic releasing hormone, naturally there will be no LH, no FSH, and without LH, without FSH, there will be no gonadal activity. गोनेड्स में कुछ नहीं होगा. गैमीट फॉर्मेशन और हार्मोन सिक्रीशन कुछ भी नहीं होगा. बोथ मेल एंड फीमेल में यही होगा. एंड दिस इज द केस इन चिल्ड्रन. चिल्ड्रन में देयर इज टोटल एब्सेंस ऑफ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. थोड़ी सी बात उसको हम करेंगे क्यों एब्सेंट होती है. सो विदाउट गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, FSH, LH, no question of protection, and without these, no question of activity in the gonads, ovaries or testes. दोनों में कुछ काम नहीं. Now this diagram, the hypothalamo-hypophyseal axis or this control system, that is brain, several stimuli from the brain, they affect the hypothalamic release of gonadotrophic releasing hormone. बहुत सी चीज़ें हैं. मिसाल के तौर पर psychic stimulation or discomfort or comfort or light, there are many things which can affect the hypothalamic limbic system, that can influence the release of gonadotrophic releasing hormone from the hypothalamus. Limbic system का part है hypothalamus. तो different stimuli from the many areas of the brain, many areas in the limbic system, they affect the release of this
gonadotrophic releasing hormone. जब ये पैदा होगी there will be release of LH and FSH. Those LH and FSH हम बात कर रहे हैं ओवरी की, हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की. We talking about the male reproductive system. So the LH and FSH will act on the testis. LH acts on the interstitial cells of Leydig for the production of testosterone, and FSH acts on the Sertoli cells for the spermatogenesis, for the regulation of spermatogenesis. इन दोनों को कंट्रोल करती है. So हमने पहले भी बात की, when the hormone level, high level of hormone or its effects will inhibit the production. Negative feedback इसी को तो कहते हैं. So this spermatogenesis and this effects of the testosterone both will inhibit the pituitary level or the hypothalamic level. Pituitary level or hypothalamic level or the limbic system level. इनको inhibit करेगी. And so this is the negative feedback control of this. Another addition to that, in addition to the normal negative feedback, when spermatogenesis is taking place, Sertoli cells are very active. There is production of a hormone inhibin. Inhibin is a hormone produced from the Sertoli cells. When they are involved, they are active in the spermatogenesis or spermiogenesis. We discussed in the previous lecture, spermatogenesis में. So this inhibin inhibits the hypothalamic as well as the pituitary. दोनों जगह पे inhibit करती है. Inhibin inhibits the gonadotrophic releasing hormone from the hypothalamus and inhibits the FSH and LH both, especially FSH, इनको inhibit करती है. So this interplay between the hypothalamus, the limbic system, hypothalamus वो भी part of the limbic system, pituitary and the gonad, इनका interplay is the responsible for the regulation of testosterone secretion. Regulation of testosterone secretion. So interstitial cells of Leydig जहाँ से वो produce होते हैं. LH stimulates the secretion of testosterone. We have explained it. उसको हम जरा words दे रहे हैं इनको. So interstitial cells of Leydig are present in newborn baby. हमने previous lecture में भी हमने discuss किया था. Because they are being stimulated by the human chorionic gonadotropin hormone from the placenta. प्रेगनेंसी के दौरान जो उसको मिली है प्लेसेंटा से. लेकिन आफ्टर बर्थ देयर इज नो ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एंड देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इन द बेबी इटसेल्फ. सो आफ्टर इट इज एब्सेंट थ्रू आउट द चाइल्डहुड. कल भी हमने बात की थी. सो एट प्यूबर्टी और नियर प्यूबर्टी दिस LH secretion starts and interstitial cells of Leydig hormone, they are stimulated again, they develop again and they produce testosterone again. तो प्यूबर्टी पे ये दोबारा शुरू होगा. इसको हम ज़रा सा बात करेंगे, ये दरमियान में क्यों रुकते हैं, इसको हम ज़रा सा आगे जाके बात करेंगे. So the testosterone has negative feedback effect on LH secretion. डायग्राम में हम देख चुके हैं. टेस्टोस्टेरोन का लेवल या इसके इफेक्ट्स दोनों LH की सिक्रीशंस को कम करेंगे. Negative feedback इसी को कहते हैं. So increased testosterone inhibits the hypothalamic gonadotrophic releasing hormone and inhibits the gonadotropes directly as well, and there is a decreased release of LH and FSH both. And decreased testosterone will have the opposite effect. The negative feedback effect जो हम explain कर रहे हैं. Hypothalamus में decreased testosterone will affect the hypothalamic increased production of gonadotrophic releasing. So those cyclic variation will be in the favor of more production, more frequency and more time duration. इसकी fluctuation will shift to higher frequency and more duration of release of gonadotrophic releasing hormone. So adenohypophysis की भी उसी तरह follow करेगी. When it is produced, these will be produced from the adenohypophysis and they will affect, जो हम diagram में देखा. Regulation of spermatogenesis अभी थोड़ी सी बात हमने कर ली है. We can imagine. Sertoli cells हैं, FSH इसको control करती है. FSH is responsible for the regulation of the spermatogenesis. Receptors for FSH are present in the Sertoli cells and the उसका फिर effect क्या होता है? This causes the enlargement of the Sertoli cells and it there is production of substances which are necessary for that spermiogenesis जो कल हमने discuss की. Previous lecture में discuss की कल उसमें all those substances are provided by the Sertoli cells. So Sertoli cells say so the testosterone also helps this process of the spermatogenesis. उसमें भी help करता है. Testosterone भी काम करती है.
सर्टोलाई सेल प्रोड्यूस हार्मोन इनहिबिन हमने देखा था नेगेटिव फीडबैक का, एडिशनल नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन इनहिबिन के ज़रिए से भी होती है. सर्टोलाई सेल्स व्हेन दे आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग मोर स्पर्मेटोजेनेसिस, इनहिबिन इज प्रोड्यूस दैट विल इनहिबिट द एलएच एज वेल एज एफएसएच. सो वो भी खुद भी ग्लाइकोप्रोटीन है. इनहिबिन हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रही है सर्टोलाई सेल से, दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सर्टोलाई सेल्स. This inhibits the follicle stimulating hormone as well as the hypothalamic gonadotrophic releasing hormone उसको inhibit करती है. So regulation of spermatogenesis through this mechanism is there. So ये diagram दोबारा आ गई है. That is, this inhibin is inhibiting at both levels, hypothalamic level here and spermatogenesis is being controlled by FSH, ये जो अभी पिछली slide पे explain किया. और testosterone lytic cell are producing testosterone and this is also negative feedback inhibition by the testosterone itself is there. So that's how it is regulated. This psychic element, limbic system involvement in the gonadotrophic releasing hormone production is very important. Different signals from the different parts of the brain, especially this limbic system और भी area, not only limbic system, बाकी area से भी, exercise or the thinking process. So the different signals from the different parts of the brain will affect the hypothalamic release of gonadotrophic releasing hormone. Psychic factors from the limbic system greatly affect the hypothalamic secretion, ये अभी हमने बात की. Hence जब उसको affect कर सकता है hypothalamic release of gonadotrophic, उसको ज़्यादा करने वाले will cause the increased production of the gonadotrophic hormones and उसको inhibit करने वाले will inhibit. For example, if a horse, बहुत अच्छी नस्ल का हॉर्स, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू पाकिस्तान के हम इसकी अच्छी नस्ल कहते हैं. इफ़ द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल ड्यूरिंग दिस ट्रैवल, वो डिस्कम्फर्ट में ट्रैवल करता है, वो हॉर्स पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते इनफर्टाइल हो जाते हैं. दिस साइकिक एलिमेंट इन दैट हॉर्स, वो जो डिफिकल्टी है, वो स्ट्रेस जो है, दैट मे इनहिबिट द हाइपोथैलेमिक रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और उसकी फर्टिलिटी खराब भी हो सकती है. सो दिस साइकिक एलिमेंट plays very important role in the this reproductive mechanisms. So hence secretion of LH, FSH, they are affected by the psychic element. Psychic element greatly influence the fertility and other aspects of the reproductive system, जो अभी मैंने एक example के तौर पर बात की. So psych plays its role in the regulation of the reproductive hormonal level as well as the physical level as well. So इस psych का अपना रोल है, और यही साइक प्रॉबेबली प्लेज रोल इन द प्यूबर्टी एज वेल. बाद जगहों पे बच्चे जल्दी प्यूबर्टी को पहुंच जाते हैं और बाद लोगों को नहीं पहुंचते. जैसे साइक, इस साइकिक एलिमेंट्स अगर स्टिमुलेट कर रहा है इस सिस्टम को, अर्ली प्यूबर्टी विल बी देयर. तो व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या होती है? दिस इज द ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन, मोटी मोटी बात करें तो ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ, इसको हम प्यूबर्टी कहते हैं. बिफोर प्यूबर्टी देयर इज नो एक्टिविटी इन द गोनेड्स बिकॉज ऑफ द टोटल एब्सेंस ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, and this is because of the total absence of gonadotrophic releasing hormone from the hypothalamus. वो क्यों नहीं है, इसको ज़रा सामने elaborate करना है. Before puberty, there is no secretion of gonadotrophic releasing hormone, no secretion of LH, FSH, ये हमने बात कर लिया है. No testosterone and spermatogenesis male में. So hypothalamus, अब ये this is the cause, अब ये cause आ रहा है, इसको red में लिख लें और याद. That is, hypothalamus is hypersensitive to smallest amount of circulating sex hormone. अभी हमने नेगेटिव फीड एक मैकेनिज्म हमने ये कि हाइपोथैलेमस, इफ टेस्टोस्टेरोन लेवल इज हाई इन एडल्ट्स एज वेल, टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर हाई होगा दिस विल नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होगी, हाइपोथैलेमिक GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन विल बी इनहिबिटेड. सो इसका क्या मतलब है? हाइपोथैलेमस इज सेंसिटिव टू हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन. यंग बेबी का जो हाइपोथैलेमस है, न्यू बॉर्न बेबी का जो हाइपोथैलेमस है, दैट इज वेरी सेंसिटिव. थोड़ा सेंसिटिव नहीं है, वेरी सेंसिटिव, यानी इवन स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन
प्रोड्यूस फ्रॉम द टेस्टिस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। हमने एड्रीनल कॉर्टिकल एंड्रोजेंस की बात की हुई है, डिस्कस किया हुआ है एंडोक्राइनोलॉजी में। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेंस आ जाएं या इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक्स से आ जाए, एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले दे कंप्लीटली इनहिबिट वेरी सेंसिटिव यंग हाइपोथैलेमस। न्यूबॉर्न बेबी का हाइपोथैलेमस बहुत सेंसिटिव है, तो अ फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन और अदर एंड्रोजन विल कंप्लीटली इनहिबिट एंड देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब ये बच्चा ग्रोइंग बेबी, gradually the hypothalamus is maturing and its sensitivity to testosterone is reducing, and asta it starts the production of the gonadotropic releasing hormone, which culminates to this puberty at the age of about 13 years 14 years पे होती है। So hypothalamus is hypersensitive to smallest amount of the circulating sex hormone in children, बस ये बात। And this hypersensitivity gradually reduces जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, and the on maturation process of limbic system, ये और है, ऑन नहीं है। और क्या मतलब लिखा हुआ है, either hypothalamus की sensitivity कम हो रही है और limbic system gradually, psychic element or limbic system is gradually maturing and it is causing the stimulation to hypothalamus and the production of that gonadotropic releasing hormone। So दोनों बातें हो सकती हैं, either hypothalamus बहुत sensitive होता है या ये होता है कि limbic system अभी इसको hypothalamus को नहीं काम करने दे रहा। Limbic system gradually mature होता है with the advancing age of the baby up to the age and then it sends signal to the hypothalamus for the production of releasing hormone। इस age तक 10 years 11 years पे ये शुरू हो जाता है and it culminates to about 13 years, और फीमेल में मेनार्की हो जाती है और मेल में भी रिप्रोडक्टिव फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। So adult sexual life and male climacteric, that is after puberty LH FSH are produced throughout life, cyclic variations are there। वो हमने साइक्लिक वेरिएशन शुरू में बात कर ली, दे विल बी प्रोड्यूस थ्रू आउट लाइफ। मेल में तो थ्रू आउट लाइफ पैदा होते हैं, फीमेल में भी थ्रू आउट लाइफ पैदा होता है, लेकिन फीमेल में फीमेल हार्मोन जो गोनेडल हार्मोन है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो खत्म होती हैं, मेल में तो वो भी खत्म नहीं होती। तो दे आर प्रोड्यूस थ्रू आउट लाइफ। आफ्टर लेट 40s और लेट 50s मेल की बात कर रहे हैं, देयर इज रिडक्शन इन टेस्टोस्टेरोन लेवल। कल शायद हमने टेस्टोस्टेरोन का वो ग्राफ देखा था कि किस एज में वो 18 ईयर्स के एज में मैक्सिमम है और फिर वो ग्रेजुअल रिडक्शन होती है 50 ईयर्स के एज के बाद, लेकिन स्टिल इट कंटिन्यूज टू बी प्रोड्यूस रहती है थ्रू आउट लाइफ, लेकिन लेवल कम होता है। इस लेवल के कम होने का इन सम मेल देयर मे बी सम इफेक्ट, सम एविडेंट इफेक्ट उसमें हो सकता है। दैट इज द डिक्रीज इन सेक्सुअल फंक्शन इन एल्डरली मेल after the age of 50 because of the reduction in LH, उसकी sexual function कम हो जाते हैं, testosterone level कम हो जाता है। So this is known as male climacteric। It is not very important, ये बात लोगों को पता ही नहीं होता male climacteric। There are no inhibition in the sexual functions as well, लेकिन अगर कोई sexual function की कमी आती है आफ्टर दिस एज 50 के बाद दिस एंड उसके कुछ सिम्टम भी कभी हो सकते हैं, तो इसको फिर हम मेल क्लाइमैक्टेरिक कहते हैं। फीमेल में तो वेरी प्रोमिनेंट चेंज अकर्स एट दिस एज, दैट इज 45 to 50 ईयर्स पे, उसको कहते हैं मीनोपाज। वो मीनोपाजल सिम्टम्स आर वेरी कॉमन इन फीमेल, उनमें तो टोटल हार्मोन टोटल एब्सेंट हो जाते हैं। उसको मीनोपाज तो बहुत डोमिनेंट फीचर है इन फीमेल एल्डरली पीपल। मेल में भी किसी बाद मेल में मेल क्लाइमैक्टेरिक देयर आर सम फीचर समटाइम्स सिम्टम्स लाइक फीमेल मीनोपाज। वो क्या क्या सिम्टम्स हैं, दे मे डेवलप हार्ट फ्लैशेस होते हैं, फीमेल को भी होते हैं मीनोपाज में, मेल को भी हो सकते हैं। साइकिक सेंसेशन ऑफ डिस्निया, उसको सांस खराब होने का फीलिंग होती है, उसकी फीलिंग होती है कि मेरा सांस खराब हो रहा है। सो दिस इज ड्यू टू द हार्मोनल डेफिशिएंसी। तो इरिटेबिलिटी, इरिटेबल हो जाता है, फीमेल भी इरिटेबल हो जाती हैं मीनोपाजल एज में। फटीग, आसानी से थक जाने वाला, टेंशन, एंग्जाइटी एक्सेट्रा, ये फीचर्स हैं मीनोपाज के भी और कभी कभी मेल क्लाइमैक्टेरिक में भी हो जाते हैं। और कभी कभी फीमेल की मीनोपाजल सिम्टम इतने ज़्यादा होते हैं उनको ट्रीट करना पड़ता है। बाद औरतें तो अडॉप्ट कर लेती हैं ग्रेजुअली, लेकिन बाद औरतें जो अडॉप्ट नहीं कर सकती उनको ये सिम्टम इतने ज़्यादा होते हैं, वी ट्रीट देम विद ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उनको ईस्ट्रोजन देनी पड़ती है। तो मेल में भी अगर ये फीचर्स मेल क्लाइमैक्टेरिक में ज़्यादा अलार्मिंग हो जाएं
तंग करने लग जाएं, देन वी मे रिक्वायर ट्रीटमेंट, एंड ट्रीटमेंट इज अगेन दी टेस्टोस्टेरोन देनी पड़ेगी, इवन ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन भी दे दें तो वो भी काम करेंगे। सो दैट्स हाउ दी हमने डिस्कस किया रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन और प्यूबर्टी क्या होती है और कैसे होती है, और स्पेशली आपने याद रखना है चिल्ड्रन में क्यों नहीं होता, दिस इज नो प्रोडक्शन ऑफ दी नो एक्टिविटी ऑफ दी गोनेट्स बिकॉज ऑफ दिस हाइपोथैलेमस की आइदर हाइपर सेंसिटिविटी और इमेच्योरिटी ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, ये भी जो भी कहा होगा। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम क्या डिस्कस करेंगे, वी विल शिफ्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होप यू आर फॉलोइंग मी, एंड आई ऑलवेज दोबारा याद कराता हूँ कि क्वेश्चन पूछना हो तो उसमें पूछ लें, कमेंट्स में अपना क्वेश्चन डाल दें तो मैं उसको जवाब दे दूँगा, किसी वक्त ऐसे रनिंग ऐसे किसी लेक्चर में दे दूँगा या स्पेशल सेंटेंस रख लूँगा। और ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको अपने दोस्तों में, अपने मेडिकल स्टूडेंट्स में इसको करें, शेयर करें, सो दैट मैनी पीपल अदर स्टूडेंट में उससे कुछ कर सकें और ये हमारे लिए सदका जारिया होगा, जो हमारा मकसद है। अक्सर मेरा मकसद यही है कि हम इस एज में आ गए हैं कि हमारे बाद ये रहे और लोग अगर फ़ायदा उठाएंगे तो हमारे लिए सदका जारिया होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।